Hi students, welcome back to the course on design of machine elements, and our today's topic is design of helical spring. So let's start with the definition of spring. What is a spring? So this is the definition of the spring. Spring is an elastic machine element which deflects under the action of load and returns to its original shape when the load is removed. Okay, so the definition of spring is that a spring is an elastic machine element. When we apply a force on the spring, it deflects, and when the load is removed from the spring, it takes its original shape. So that's why it is called as an elastic machine element. Now, these are the different types of springs. This figure shows your compression spring, and this is your extension spring. Helical springs are of two types. One is helical compression spring and helical extension spring. Okay, so helical compression springs are those springs when we apply the force on the spring in such a way that it tries to shorten its length. Okay, so that is called as your helical compression spring. And helical extension springs are those springs when we are applying a force on the spring in such a way that it tries to elongate or it tries to increase the length of the spring. Those springs are called as helical extension spring. Okay, and these are the torsion spring, the more types of springs. And this figure shows your leaf spring, okay, which you might have seen in heavy vehicles like trucks, buses. Okay, now let me explain you one more thing over here, that the stresses which are induced in the springs are the torsional shear stresses, okay, in the spring wire. Even the spring is subject to axial loading. Axial loading means, as I told you that in helical compression spring and helical extension spring, helical compression and in helical extension spring, we are applying a compressive or a tensile force. But it does not mean that the spring is induced with compressive stresses and the tensile stresses. No. Okay. So whether it is a compression spring or it is a extension spring, the stresses which are induced in the spring will be torsional shear stresses. So kindly note this thing. Now let us discuss some important functions and applications of springs. The first function of the spring is springs are used to absorb shocks and vibrations. And these are the examples: vehicle suspension springs, the springs which we generally use in vehicles suspension system. Those are used to absorb the shocks and vibrations. Railway buffer springs, okay, buffer springs in elevators, and vibration mounts for machineries. Second function is springs are used to measure the force. So measuring forces is the second function. And the examples of such springs where the springs are used to measure the force are spring balances and gauges. Okay. The third function is springs are used to store the energy. Okay, like in clocks, toys, movie cameras, circuit breakers, and starters. Okay, these are some examples where springs are used to absorb the energy and releases the energy. Okay. Now the fourth function is springs are used to apply the force and control the motion. Okay, springs are also used to apply the force and control the motion. For examples, cam and followers. In cam and followers, spring is used to maintain the contact between the cam and the follower. Okay, and in clutches, the springs are used to apply the force to engage or disengage the clutch. Okay, so these are some important functions and some applications of the springs. Now let us move ahead and let me explain you terminology of helical spring. In our syllabus, we have designing of helical springs. So we will discuss the things which are related to helical springs, and we will design the helical spring only. Okay, in our syllabus, we have only helical spring and its designing. Now, let us take a helical compression spring. This is a figure which shows your helical compression spring and the different dimensions. Small d means wire diameter or coil diameter of the spring. P, as you know, P is the pitch between the two coils, and capital D is here mean coil diameter, DI is the inside diameter, and DO is the outside diameter, and this is the free length. Okay, so all these terms are written over here, that small d is the wire diameter or coil diameter, DI inside diameter, I explained you already, and DO outside. D is the mean coil diameter. And how you will calculate the mean coil diameter as the summation of inside plus outside
diameters of the spring divided by 2. So see this one, center to center distance will become your mean coil diameter. Okay, and let me just tell you one more thing over here, that helical springs are the most commonly used type of springs in our daily life. Okay, this is the most commonly type of spring which generally used in daily applications. And how the helical springs are made? Helical springs are made from a wire. Okay, we have a wire, and that wire is generally circular in cross section, and we bent that wire in the form of helix. Okay, we have a wire and we bent, usko modte hum log in the form of helix. Okay, and then a helical spring will, in this way you can make your helical spring. Now there is, अब तो ये तो देखिए small d, di, do, d, ये तो terms हैं जो हम use करते हैं springs में. Now there is an important parameter in spring designing which is called as spring index, and it is denoted by capital letter C. तो capital letter C से हम denote करते हैं spring index को, and it is the ratio of the mean coil diameter to the wire diameter of the spring. Okay, now this is very, very important in spring design. While we are designing a helical spring, the designer must use his or her good judgment in order to decide or in order to assume the spring index. Now let me just explain you this in detail, that what is the function of the spring index. So first of all, remember this thing, that spring index indicates the relative sharpness of curvature in any spring. किसी spring में कितना sharpness of curvature है, that defined by the spring index. So now there are two terms. First is what will happen if the spring index is low, and what will happen if the spring index is high. So let me explain you the first case. If the spring index is very low means, let us say we are taking a low value which is less than 3. If the spring index is less than 3, what will happen? First of all, stresses are excessive due to curvature effect, and second thing is such type of springs are prone to cracks. Okay, so this is the thing, and moreover this, such type of springs are very difficult to manufacture. From manufacturing point of view, if the spring index is very low, such type of springs are very difficult to manufacture. On the another side, if we have a C value which is high means, let us say we took the value from 3 to 15. So this is the range which we generally take, and agar less than 3 है तो क्या हो रहा है, और अगर greater than 15 है तो क्या होगा, that I'm explaining you. If the spring index is greater than 15, what will happen? It means sharpness of curvature is very less. If the sharpness of curvature of the spring is less, it means there is a large variation in the spring coil diameter. Spring coil diameter जो होगा उसमें large variation होगा. Okay, there is a large variation in the spring coil diameter just like this. Or if the ऊपर वाले केस में अगर हम बात करें, the value of C is low, sharpness of curvature is very less. Okay, और इसमें क्या होगा, इसमें cracking हो जाएगा, cracks आ जाएंगे इसमें. And what will happen if the spring index is greater than 15? First of all, आपने देख लिया कि there is a large variation in the spring coil diameter, and also moreover that it is prone to buckling, and the coils of the springs are tangled with each other more easily in such type of springs. Okay, so this is more prone to buckling if C is high. If C is low, then this is more prone to cracking, and excessive stresses are also there, and such type of springs are very difficult to manufacture. Okay, so this is the importance of the spring index. Now the question comes, what should be the proper value which we must take while designing the springs? So in practical applications, the spring index usually varies from 4 to 12. However, a spring index in the range of 6 to 9 is still preferred, particularly for closed tolerance springs and those which are subjected to cyclic loading. So 4 to 12 हम value consider करते हैं, that this is the value जो आपको लेनी है 4 से 12 के बीच में. 4 से कम नहीं लेनी है और 12 से ज़्यादा नहीं लेनी है आपने. Okay, now I hope it is clear to you now in well advance. One more thing which I would like to mention over here. There is one more term apart. See, terminology is up to here only. There is one more term which I would like to mention over here. This is called as your helix angle. Okay, so you know all the coils are at a certain angle. Okay, this is the axis of the spring. अगर मैं इसकी बात करूँ, this term, this axis, this is the axis of the spring.
और इसी एक्सिस के अलोंग फोर्स लगती है, टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स. फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग. ओके, so if we draw perpendicular from the axis of the spring, we draw perpendicular from the axis of the spring, the angle, this particular angle, अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, this angle is called as your helix angle. Okay, now helix angle के बाद हमारे पास दो तरह की टर्म्स आती हैं, open coiled helical spring and closely coiled helical springs. There are two terms. Okay, इसको हम इस तरह से बोल देते हैं open coiled helical spring, okay, and closely coiled helical spring. इसको हम लोग डिफाइन करेंगे हेलिक्स एंगल के रिस्पेक्ट में. इफ हेलिक्स एंगल को सपोज आई एम टेकिंग विद अल्फा, इफ हेलिक्स एंगल अल्फा, so if the helix angle is greater than 10 degree, it is called as open coiled helical spring, and if the helix angle is less than 10 degree, then this is called as closely coiled helical spring. ये terms आ जाती हैं एग्जाम्स में. So with reference to helix angle, we are defining all these terms. Okay, now इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर जो स्प्रिंग्स की कॉइल्स हैं अगर वो पास पास में हैं, okay, और the helix angle is less, so the coils are, you know, they are more close to each other in closely coiled helical spring. But in open coiled helical springs, because the helix angle is more, so there is a big gap between the coils. I hope it is clear to you now. Second term that we have is spring length terminology. Okay, now we will define one more term, which is spring length terminology. Suppose we are going to find out the length of the spring. So these are the three terms which we generally use in spring length terminology. But first one is free length, second is compressed length, and third one is your solid length. Now let me start with free length. Okay, in free length you can see also that in figure B and C there is a force which is showing, but in figure A there is no force which is acting on the spring. It means free length of the spring is that length of the spring which we measured along the axis of the spring when there is no force acting on the spring. This is your free length. हम कैसे स्प्रिंग की लेंथ को मेजर करेंगे, हम along the axis of the spring उसकी लेंथ को मेजर करेंगे. When there is no force acting on the spring, उसको बोलेंगे free length. Okay, then we have compressed length. Compressed length में देखिए आपको पास लिखा हुआ P maximum, means suppose we are applying a force on the spring and that the magnitude of that force is maximum. मैक्सिमम आपने फोर्स लगा दिया स्प्रिंग के ऊपर, एंड स्टिल देयर इज अ गैप बिटवीन द कॉइल्स ऑफ द स्प्रिंग्स. ठीक है ना, जब आप किसी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाओगे तो कॉइल्स पास पास में आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इनिशियली देयर इज अ गैप बिटवीन द कॉइल्स. आप देख भी सकते हो फिगर में. और क्या हो गया, जैसे जैसे फोर्स लगाते जाओगे वो गैप कम होता जाएगा. ओके, बट हम बात कर रहे हैं कंप्रेस्ड लेंथ की, दैट यू आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग अलोंग वंस अगेन अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग व्हेन there is a maximum force which we are applying on the spring, but still there is a gap between the adjacent coils. That length is called as compressed length of the spring, because deflection जो इसमें आएगा वो maximum deflection होगा. Deflection will be maximum force लगाने में. So this is your compressed length. Now third figure which is showing your solid length. Solid length means we are applying a force on the spring in such a way that each coils are touching each other. Okay, or you can say adjacent coils are touching each other. We are applying a force in such a way. मतलब आपने जो गैप है उसको पूरे को फिल कर दिया, कोई गैप बचा ही नहीं. फर्दर देयर इज नो कंप्रेशन एग्जिस्ट, मतलब और वो स्प्रिंग उसके बाद कंप्रेस्ड हो ही नहीं सकता क्योंकि एक कॉइल ने दूसरी कॉइल को टच कर दिया है. दैट इज कॉल्ड एज योर सॉलिड लेंथ. सो आई होप ये तीनों टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो गई होंगी. बेसिकली फ्री लेंथ में हम क्या करते हैं, जब किसी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है उसकी जो लेंथ है अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग उसको बोलते हैं फ्री लेंथ. compressed length में maximum force लगा दिया हमने, still there is a gap between the springs, that is your compressed length. Solid length is that length of the spring which is so compressed that one coil is touching the another coil and there is no further compression in the spring now possible. So ये हैं spring length terminologies. यही हमने explain किया हुआ है. ये solid length है, definition मैंने आपको बता दी. हाँ, now the question comes कि इसका formula क्या बनेगा. सपोज देयर आर 5 नंबर ऑफ कॉइल्स इन द स्प्रिंग्स एंड स्प्रिंग का कोई कॉइल डायमीटर भी है, पांचों के पांचों कॉइल्स आपस में टच कर रही हैं, या 4 मान लेता हूं, जैसे मेरे हाथ में 4 कॉइल्स हैं, तो आपने फोर्स लगाया और क्या कर रहा है, इस तरह से फोर्स लगाया कि आपस में टच हो गई हो, तो इसका कितना लेंथ होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्प्रिंग. आप बोलोगे सर 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है 4 इनटू इसका स्प्रिंग डायमीटर. सब सोचिए आपकी इनका सबका डायमीटर बराबर है,
तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स इनटू डायमीटर विल बिकम द सॉलिड लेंथ, वही लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक है ना। सॉलिड लेंथ का फॉर्मूला वही बना यहाँ पे, सॉलिड लेंथ मींस टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स मल्टीप्लाई बाय कॉइल डायमीटर विल गिव्स अस द सॉलिड लेंथ। ओके, सेकंड इज कंप्रेस्ड लेंथ, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया क्या होता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, जो भी गैप होगा इनके बीच में, वो एडजेसेंट कॉइल्स, बहुत सारी कॉइल्स होंगी, हर कॉइल में गैप होगा, बट टोटल गैप कितना होगा ये भी आपको देखना पड़ेगा। सो टोटल गैप नाउ विल बी, अब बोलोगे सर देयर आर टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, सपोज एन नंबर ऑफ कॉइल्स आर देयर, 10 कॉइल्स है सपोज, तो 10 कॉइल के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, सपोज 1 mm का गैप है या 2 mm का गैप है, तो 10 into 1 कर दोगे या 10 into 2 कर दोगे, वो टोटल गैप आ जाएगा आपका। सो वही लिखा है यहाँ भी, NT into gap between adjacent coils, that will be your total gap. Now the question comes, what is -1? -1 बेसिकली मैं आपको बताऊंगा टर्मिनोलॉजी में, या हमने नेक्स्ट में बेसिकली क्या है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉइल्स इन द स्प्रिंग्स, वन इज कॉल्ड एज एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स एंड सेकंड इज कॉल्ड एज इनएक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स। एक्टिव कॉइल्स वो कॉइल्स होती हैं बेसिकली जो स्प्रिंग एक्शन में कंट्रीब्यूट करती हैं। सपोज आपने फोर्स लगाया तो कॉइल्स में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, बट देयर आर सम कॉइल्स विच डू नॉट डिफ्लेक्ट, और जिनमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है फोर्स लगाने पे, सो उसको हम ये बोलते हैं कि बेसिकली दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन द स्प्रिंग एक्शन। सम ऑफ द कॉइल्स आर कंट्रीब्यूटिंग बिकॉज दे आर डिफ्लेक्टिंग when the force is applying, but some of the coils are not deflecting, means there is no deflection. तो जिसमें डिफ्लेक्शन हो गया उसको बोलते हैं एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स, जिसमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ उसको बोलते हैं इनएक्टिव कॉइल्स। तो यहाँ पे जो -1 है वो इनएक्टिव कॉइल है बेसिकली, और इनएक्टिव कॉइल्स होती हैं जैसे आपने स्प्रिंग को इनएक्टिव कॉइल, -1 क्या इंडिकेट कर रहा है, इनएक्टिव कॉइल्स को। बेसिकली इनएक्टिव कॉइल्स आर देयर व्हेन द स्प्रिंग, जो बेसिकली आपने किसी शीट के साथ अटैच किया या ग्राउंड के साथ अटैच किया, तो सबसे एंड में जो कॉइल होती है वो इनएक्टिव होती है बेसिकली, क्योंकि वो पर्टिकुलर फाउंडेशन के साथ अटैच रहती है, ठीक है ना, और तो इसलिए उसमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। सो लेट्स मूव अहेड। दिस इज द फ्री लेंथ। नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट द फ्री लेंथ। देखिए ये मैं आपको फिगर के हेल्प से बता देता हूँ, ये फ्री लेंथ है। नाउ फ्री लेंथ में आप बोलोगे सर दिस इज योर डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन प्लस योर कंप्रेस्ड लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कंप्रेस्ड लेंथ ही हुआ ना, तो कंप्रेस्ड लेंथ प्लस डिफ्लेक्शन, कंप्रेस्ड लेंथ प्लस डिफ्लेक्शन इज योर फ्री लेंथ। बट वंस अगेन अगर हम बात करें इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लेंथ, तो आप बोल सकते हो सर, आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि देखिए, वन सेकेंड, ओके, आपको पता ही है कि ये जो गैप है या ये जो लेंथ है ये टोटल एक्सियल गैप है। ओके, दिस इज टोटल एक्सियल गैप, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज योर टोटल एक्सियल गैप, या टोटल गैप लिख देता हूं मैं, टोटल गैप, दिस इज योर सॉलिड लेंथ, एंड ये जो बचा आपका ऊपर, इसको मैं ऐसे ले आता हूं आगे, ये आपका क्या है, आप बोलोगे सर ये तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है जब हम फोर्स लगाएंगे। इट मीन्स नाउ अब ये आपका बनेगा यहां से लेके यहां तक फ्री लेंथ। इट मीन्स नाउ वी कैन राइट फ्री लेंथ हैज सॉलिड लेंथ प्लस टोटल गैप प्लस डिफ्लेक्शन, ऐसे भी तो बन सकता है हमारा फॉर्मूला। तो सॉलिड लेंथ प्लस टोटल एक्सियल गैप प्लस डिफ्लेक्शन, दैट विल बी योर फ्री लेंथ। ओके, तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ गया फ्री लेंथ का, दैट दिस इज योर फ्री लेंथ। आई होप इट इज वेरी वेल क्लियर। और टोटल एक्सियल गैप हमने कैसे निकालना है वो मैंने पिछली स्लाइड में देख लिया, दैट NT-1 into गैप बिटवीन adjacent coils, और गैप बिटवीन adjacent coils हम लोग एज्यूम करते हैं कि इट इज फ्रॉम 1 mm to 2 mm, ठीक है ना, इस तरह से एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट वी हैव पिच ऑफ द कॉइल। नाउ सपोज आपको पिच निकालनी है, और पिच ध्यान रखिएगा हमेशा, पिच फ्री, जब स्प्रिंग के ऊपर आप फोर्स नहीं लगा रहे हो तभी आपने पिच निकालनी है उसकी। व्हेन यू आर अप्लाइंग द फोर्स, पिच वेरी कर रही है फिर आपकी, है ना, पिच कम हो रही है आपकी या पिच ज्यादा हो रही है, सो आपने जो पिच of the coil निकालनी है, it is basically defined the axial distance between the adjacent coils in uncompressed state of spring, means when there is no force acting on the spring, then you will have to find out your pitch, and it is given by how free, क्योंकि free length basically ही बताएगी हमें pitch, तो free length divided by total number of coils, okay, free length divided by total number of coils will gives us the pitch। और once again NT-1 करा है because there are some inactive coils, there are some inactive coils, उसको हम क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। So formula will become free length divided by NT-1। There is one more term, that is stiffness of spring, which is
denoted by small letter k, is defined as force per unit deflection. P is the force and delta is the deflection. So force per unit deflection is called as your spring index. तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और डिफ्लेक्शन हो गया एमएम में. सो न्यूटन पर एमएम ये इसकी यूनिट बन जाएंगी. ओके ये देखिए स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग न्यूटन पर एमएम, पी इज द एक्सियल स्प्रिंग फोर्स, delta is the axial deflection of the spring corresponding to force. And there are also some synonyms for the stiffness of the spring such as rate of spring भी बोल सकते हैं हम इसको, gradient of spring भी बोल सकते हैं, scale of spring भी बोल सकते हैं, या simple spring constant भी बोल सकते हैं. सपोज हमसे पेपर में पूछ लिया गया कि कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ स्प्रिंग, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या टर्म आ गई, या स्केल ऑफ स्प्रिंग पूछ लिया या स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ लिया आपसे. सो ये सब के सब क्या है, स्प्रिंग स्टिफनेस को ही बताते हैं या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग को बताते हैं. ओके दैट इज लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन. सो आई होप ऑल दिस टर्म्स आर क्लियर टू यू नाउ. नाउ लेट अस मूव अहेड, दैट इज स्टाइल ऑफ एंड्स. सो देखिए स्टाइल ऑफ एंड्स बेसिकली जो एंड होता है बेसिकली स्प्रिंग का, वो अलग अलग तरह से हो सकता है आपका एंड्स ऑफ स्प्रिंग्स. जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आप कि दिस इज द एंड स्टाइल्स ऑफ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग. हेलिकल कंप्रेशन बिकॉज वी आर गोइंग टू डिजाइन नाउ हेलिकल स्प्रिंग्स, सो हम हेलिकल स्प्रिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग्स के 4 स्टाइल्स हैं एंड्स के. पहले है प्लेन एंड, इस तरह से है प्लेन एंड ग्राउंड्स, प्लेन एंड ग्राउंड एंड्स. बेसिकली ग्राउंड एंड्स मींस आपने क्या करा, उसको ऊपर से काट दिया और वो ग्राउंड के साथ क्या हो रहा है अब अटैच, बेसिक ग्राउंड के साथ जो सरफेस है उसी के पैरेलल सरफेस में हमने ऐसे उसका सरफेस को क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया. तो ये प्लेन एंड ग्राउंड एंड्स हो गया. ये स्क्वायर एंड्स है और ये स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड्स हैं. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एंड्स एंड बेस्ड अपॉन द एंड्स वी हैव अ टेबल, दैट इज टाइप ऑफ एंड के बेस पे एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स निकाल सकते हो आप. ओके बिकॉज एक चीज ध्यान रखिए, आप ध्यान रखिए कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स बनेगी आपकी वो एक्टिव प्लस इनएक्टिव होंगी, एक्टिव प्लस इनएक्टिव कॉइल्स के बराबर होंगी, एक्टिव प्लस इनएक्टिव कॉइल्स. या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि NT टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स को हम लेटर N से डिनोट करते हैं, प्लस इनएक्टिव ऐसे रख देते हैं. इनएक्टिव को हम लोग कोई नोटेशन नहीं दे रहे हैं. अब आपको प्लेन एंड्स में नंबर ऑफ एक्टिव टर्न जो निकालने हैं वही बोल, क्या इसमें यहां से N निकालिए आप बोलोगे सर यहां से जो N बनेगा आपका, वो N बनेगा आपका टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स माइनस इनएक्टिव कॉइल्स, माइनस इनएक्टिव कॉइल्स, यही तो बनेगा, वही लिखा है यहाँ पे. सो ये बोल रहा है प्लेन एंड्स में नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स आर NT, मतलब देयर इज नो इनएक्टिव कॉइल. इसका मतलब ये भी है नो इनएक्टिव कॉइल, इसमें कोई इनएक्टिव कॉइल नहीं है. देयर इज नो इनएक्टिव कॉइल इन प्लेन एंड. इन प्लेन एंड ग्राउंड एंड्स NT माइनस हाफ, हाफ मतलब इनएक्टिव कॉइल है, तो हाफ इनएक्टिव कॉइल है इसमें आदि. इन स्क्वायर एंड्स -2, इसका मतलब 2 कॉइल्स उसमें इनएक्टिव होंगे, 2 कॉइल्स आर इनएक्टिव. आई होप इट इज क्लियर. आपको पता चल पा रहा है कि क्योंकि फॉर्मूला पता लग गया ना हमें कि टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स जो एक्टिव और इनएक्टिव होती हैं, वहां से एक्टिव निकालने तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स में से इनएक्टिव माइनस कर देंगे. तो ये जो नंबर लिखा हुआ है आपके पास वो इनएक्टिव कॉइल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ स्क्वायर एंड्स में भी सेम है, 2 कॉइल्स आर इनएक्टिव, 2 coils are inactive. ओके सो इसी के बेस पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये टेबल आपके काम आएगा फिर. ओके दीज आर द एंड्स ऑफ द हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग. जो हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग होता है ना बेसिकली, उसमें क्या करना है आपने, उसमें उसको आपने फोर्स लगानी है, मतलब टेंसाइल फोर्स लगानी है. तो टेंसाइल फोर्स लगाने के लिए उसका जो हुक है, आपके पास एक हुक होना चाहिए तभी तो फोर्स लगाओगे आप उसमें. तो ये देखिए ये एंड्स हैं किसके, हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग के. सो इसमें जो एंड्स होते हैं वो वी हुक हो गया, रेक्टेंगुलर हुक हो गया आपके पास, फुल हुक हो गया आपके पास इस तरह से, और एक्सटेंडेड हुक हो गया आपके पास. सो इसमें भी 4 तरह के स्टाइल्स हैं एंड्स हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग में. और इसमें एक चीज नोट कर लीजिए कि इन हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग्स देयर आर नो इनएक्टिव कॉइल. कोई इनएक्टिव कॉइल नहीं होती है, सारी की सारी एक्टिव कॉइल्स होती हैं. सारी कॉइल्स कंट्रीब्यूट करती हैं स्प्रिंग एक्शन में इन हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग एंड्स में. ओके सो यहाँ पे आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इस बात को. Here all coils are active. Here all coils contribute to the spring action. Contribute to the spring action.
I hope it is clear. Okay. So this will be the theory part. I hope it is very much clear to you now. Now we will design our helical compression spring. Okay. So let me just explain you how we will design helical springs. So there are two types of equations which we will use. One is called as load stress equation and second is called as the load deflection equation. Load stress equation is used in order to find out the wire diameter and the mean coil diameter. Okay, so यहाँ से हम क्या निकालेंगे? यहाँ से हम लोग wire diameter that is small d, and we will calculate mean coil diameter that is कैपिटल डी. तो मैंने वही लिखा हुआ है कि डी और स्मॉल डी और कैपिटल डी निकालने के लिए वी विल यूज लोड स्ट्रेस इक्वेशन, और लोड स्ट्रेस इक्वेशन ये होती है आपके पास टाउ इज इक्वल टू के इंटू 8pd डिवाइड बाय पाई डी क्यूब. देखिए, यू आर फैमिलियर विद पी. पी इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग, डी इज द मीन कॉइल डायमीटर एंड स्मॉल डी इज द वायर डायमीटर. एंड व्हाट इज कैपिटल के? कैपिटल के यहाँ पे है वाहल्स फैक्टर, स्मॉल के क्या है? स्प्रिंग इंडेक्स. कंफ्यूज नहीं होना है. कैपिटल के इसके लिए है वाहल्स फैक्टर, यहाँ पे वाहल फैक्टर है, और स्मॉल के स्प्रिंग इंडेक्स है. ओके, नाउ द वाहल फैक्टर्स वैल्यू इज 4c minus 1 divided by 4c minus 4 plus 0.615 divided by c. So here c is the spring index. Whatever be the value of spring index, whether you are assuming, और assuming कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया है, between 4 to 12 इसके बीच में आपने assume करनी है. स्प्रिंग इंडेक्स लो होता है तो क्या होता है, हाई होता है तो क्या होता है, ये डिटेल में मैंने आपको बता दिया. नाउ स्प्रिंग इंडेक्स की वैल्यू डी बाई डी होती है, ये भी पता है हमें. Now, what will happen? Spring index is capital D by small d. So we can rewrite equation number 1 as, let's say, देखिए आप, tau is equal to k 8pd divided by pi into d square. ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं, d into d square, d cube, यही एक ही बनेगा. इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कैन बी रिटन एज. बट एक बात ध्यान रखिए, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे? इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ स्मॉल सी से. तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि इस टर्म को मैं कैपिटल सी से रिप्लेस कर सकता हूँ. इफ वी रिप्लेस डी बाई डी विद सी, देन द इक्वेशन विल बिकम 8p, अब इसको आप लिख लीजिए, डी बाई डी सी डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर. ठीक है ना. इन केस स्प्रिंग इंडेक्स इज गिवन टू अस और वी आर एज्यूमिंग, तो डायरेक्टली आप यहाँ से स्प्रिंग डायमीटर या कॉइल डायमीटर निकाल सकते हो इस इक्वेशन यूज करके. तो बोथ इक्वेशंस आर सेम. ठीक है ना. ओके, सो व्हाइल वी आर डिजाइनिंग द स्प्रिंग्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ इक्वेशंस. वन इज लोड स्ट्रेस इक्वेशन, जैसे मैंने आपको बोला, लोड स्ट्रेस इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मीन कॉइल डायमीटर एंड द वायर डायमीटर. नाउ सेकंड इक्वेशन इज दैट वी हैव इज लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशन. And load deflection equation is used to find out active number of coils and total number of coils. Okay, so मैं लिख देता हूँ, it is used to find out active number of coils, that is n, and total number of coils. Okay, I hope it is clear now. So load deflection की जो इक्वेशन है वो है डेल्टा इज इक्वल टू 8pd क्यूब इंटू n डिवाइड बाय GD4, वेयर p is the force as you know, capital D is the mean coil diameter, n is the active number of coils, g is the modulus of rigidity of the wire. वायर कौन से मटेरियल की बने उसका modulus of rigidity क्या है वो पता होना चाहिए, and small d is the wire diameter. Now from this formula you can find out small, you will find out capital N, that is active number of coils. So from here n will become n delta into GD4 डिवाइड बाई 8pd क्यूब. इस फॉर्मूले का यूज कीजिए और आप लोग निकाल सकते हो एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स. आफ्टर दैट यू नो वी हैव पिच, फ्री लेंथ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स माइनस 1, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग निकाल सकते हो आप लोग. सो दिस इज द प्रोसीजर हाउ वी विल डिजाइन द स्प्रिंग्स. ओके, दिस इज द प्रोसीजर. आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ.